Assalamu alaikum. Today is the second class of chemistry. In the previous class, we have discussed about chemistry, its importance, its main branches. Now, today we will discuss about contributions of scientists, contribution of Muslim scientists and contribution of non-Muslim scientists. In this topic, the Muslim period, we will discuss about the contribution of Muslim scientists. Let's start. The Muslim period was from 600 to 1600 AD in the history of chemistry and is known as the period of alchemists. First, what is alchemist? Alchemists are the chemists who are Muslim. And this time period belongs to alchemists because during this time period there were a lot of contributions by Muslim scientists. What were their contributions? During the first few centuries of Hijrah, the Muslim scientists made rich contributions to the various branches of science, especially in the field of chemistry, and introduced scientific methods and experimentations. What are scientific methods? We will discuss it later in this chapter. The modern scientific knowledge is based on the contribution of these Muslim scholars. Okay. The alchemists developed and used many laboratory equipment such as funnel, beaker, crucibles for melting and fusion, retorts for distillation, balancing for weighing, etc. They discovered various acids, alcohols, and medicines. In the both paragraph, we get to know that Muslim scientists did many discoveries and give many knowledge, introduce scientific methods and experiments. Because of these scientific methods and experiments, many of the discoveries was made. यानी कि उन्होंने जो scientific methods हमसे इंट्रोड्यूस करवाए, जो experimentations methods हमसे इंट्रोड्यूस करवाए, उनकी बेस पे बहुत सी आगे डिस्कवरीज की गई. इसी तरह हमारे लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स जो हैं, जैसे फनल, बीकर, क्रूसिबल रिटॉर्ट्स फॉर डिस्टिलेशन, बैलेंसिंग फॉर वेइंग, ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, एसिड, अल्कोहल, मेडिसिन, इन सब को हमसे इंट्रोड्यूस कराना, डेवलप करना, इनके यूजेस हमें बताना, ये सब हमारे अल्केमिस्ट ने हमसे इंट्रोड्यूस करवाया. ओके, देयर आर 4 फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट. नंबर 1, जाबिर इब्न हय्यान. Jabir ibn Hayyan, generally known as the father of alchemy. अब इन्हें father of alchemy क्यों कहा जाता है? Because he invented experimental methods for the preparation of nitric acid, hydrochloric acid and white lead. ये बहुत important agents हैं जिनकी preparation methods हमसे इन्होंने इतना टाइम पहले इंट्रोड्यूस करवाए थे. He also developed methods for the extraction of metals from their ores and dyeing clothes. What is the meaning of extraction of metals from their ores? जब ये मालूम होता है कि किसी माउंटेन में या अर्थ के किसी पार्ट में मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह मौजूद हैं, तो वहाँ पे डिगिंग की जाती है और उसके बाद वहाँ से उन प्रीशियस एलिमेंट्स को
एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि जब आपने डिगिंग करके उस सब्सटेंस को वहाँ से निकाला तो ऑब्वियसली उस सब्सटेंस के साथ जो आपको चाहिए था, जो मेटल आपको चाहिए था, उसके साथ रॉक, सैंड, नॉन मैटर्स, दूसरे मैटर्स, मिनरल्स वगैरह भी ऑब्वियसली शामिल होंगे। तो अपनी पसंद का उसमें से मेटल निकालना वो एक्सट्रैक्शन है, ठीक है। और वो जो पूरा पार्ट आपके पास मौजूद था जिसमें से आपने अपनी पसंद का मेटल निकाला, उस पूरे पार्ट को आप ओर कहेंगे। तो उन्होंने, जाबिर इब्न हय्यान ने क्या किया, डेवलप मेथड्स डेवलप करे फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड डाइंग क्लोथ्स। बहुत से इम्पॉर्टेंट मेथड्स डेवलप किए जिनके थ्रू हम क्लोथ्स को डाई कर सकते हैं। On this list, the second was Al-Razi. He was a physician, a chemist, and a philosopher. He was an expert surgeon and was the first to use opium as an anesthesia. At that time, उस ज़माने में किसी पेशेंट का अगर ऑपरेशन किया जा रहा है तो वो उस वक्त कॉन्शियस होता था, होश में होता था। उसको बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया देना पड़ता है। तो उस ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। तो जिसको ऑपरेशन हो रहा होता था वो पेशेंट कॉन्शियस होता था, तो उसे अनकॉन्शियस करने के लिए, बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले ओपियम एक सब्सटेंस थी, उसे यूज़ किया एज एन एनेस्थीसिया, यानी कि ऐसी दवा के तौर पे जिससे बेहोश किया जा सके, अनकॉन्शियस किया जा सके। He divided the substances into living and non-living origins. उन्होंने लिविंग ओरिजिन्स को, ऑर्गेनिजम्स को अलग किया और नॉन लिविंग को अलग किया, which was later adopted by Berzelius. Okay. In 1806, to classify chemical compounds on the basis of their origins as organic and inorganic compounds. Later क्या हुआ, Berzelius ने organic और inorganic compounds को अलग किया। तो ये चीज़ जो हुई, ये कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने किया, वो किसकी थ्योरी की बेस पर किया, इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने लिविंग और नॉन लिविंग को अलग किया था। Al-Razi prepared ethyl alcohol by fermentation process. Al-Razi ने इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर किया। अल्कोहल, एक नॉर्मल अल्कोहल जो है वो एक नॉर्मल अल्कोहल है, ठीक है, और वो शराब नहीं होती, उसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं, और इथाइल अल्कोहल वो टाइप है जिससे शराब कहा जाता है। उसे फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू बनाया जाता है। अब ये अल-राज़ी ने प्रिपेयर किया, तो आप ये सोचेंगे कि उन्होंने इथाइल अल्कोहल को क्यों प्रिपेयर किया। इथाइल अल्कोहल बहुत सी मेडिसिन्स में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में एज अ केमिकल यूज होता है। द नेक्स्ट वन इज अल-बेरूनी. He contributed a lot in physics, metaphysics, mathematics, geography, and history. In the field of chemistry, he determined the densities of different substances. इनकी बहुत सी contributions हैं, जिनमें से मेन contribution इनकी ये थी कि इन्होंने बहुत से different substances की densities कैसे पता करनी है, वो methods हमसे introduce करवाए. The last one is Ibn Sina. He was famous for his contribution in the field of medicine, medicinal chemistry, philosophy, mathematics, and astronomy. इन साइंटिस्ट से रिलेटेड जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो सब मैं आपको रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करूँगी।
आपको नोट्स, ताकि आप चाहें तो उनको अपनी कॉपी में उतारें, उनसे याद करें, या आप कोई और नोट्स यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. I will provide you notes through screenshots on your WhatsApp group. These Muslim alchemists were interested more in finding a way to prolong life and to convert baser metals like lead, copper into gold. ये जो मुस्लिम साइंटिस्ट है, इनका ज़्यादा इंटरेस्ट किस तरफ था? फॉर प्रोलॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, एंड टू कन्वर्ट बेसर मेटल्स. बेसर मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जिनके ऊपर आप कोटिंग करके उन्हें एक मेटल से दूसरे मेटल में कन्वर्ट कर सकें. यानी दिखने में वो दूसरा मेटल होगा, लेकिन उसके ऊपर कोट चढ़ा दिया गया और वो रियल मेटल जो है वो छुप गया. तो वो मेटल आपको बता देगा कि लेड है, कॉपर है, और इनको कन्वर्ट कर दिया गोल्ड में. गोल्ड की कोटिंग कर दी गई इन बेसर मेटल्स पे. Although their efforts were futile, but their researches led to the discoveries of many substances and laid the foundation of chemistry. इनकी एफर्ट्स इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन इनकी एफर्ट्स से बहुत सी ऐसे रिसर्चेस सामने आई जिनसे बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज लेटर ऑन हुई. By the late 16th century, a lot of chemical laboratories sprang up, and the important reagents like sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acid, silver nitrate, etc. were discovered. Chemists of that period, however, devoted their energies mainly to the production of drugs for the use of medicine. इसमें आपको यही बताया गया है कि इन्होंने बहुत से लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स भी बनाए और बहुत से रिएजेंट्स भी बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स जिनके बगैर बहुत से हमारे केमिकल एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो सकते. लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं. इन्होंने अपनी एनर्जी कहाँ डिवोट की? In the production of drugs for the use of medicines. क्यों? Because they are interested in finding a way to prolong life. Our next topic is the modern period. In this modern period, there are a lot of non-Muslim scientists. Number 1, Robert Boyle. इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड द आइडिया दैट द केमिस्ट्री शुड बी रिगार्डेड एज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर विद द सोल एम ऑफ प्रमोटिंग नॉलेज. सिस्टमैटिक क्या है? सिस्टमैटिक मीन्स ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड, बेस्ड ऑन लॉजिक्स, प्रैक्टिकल्स. And what is systematic study? Basically, systematic study, we call it a method by which we are looking for a cause and effects and searching for specific evidence. Okay? So because of this, a lot of discoveries were made during later years. Number 2, J. Black made a study of carbon dioxide. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज, ये पूरी स्टडी हमारे सामने जे ब्लैक ने इंट्रोड्यूस करवाई. जे प्रीजली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड. इनको डिस्कवर, ऑक्सीजन को डिस्कवर किसने किया? जे प्रीजली ने. Scheele discovered chlorine, Cavendish discovered hydrogen, Lavoisier discovered that the oxygen constituted about 1/5 of air. यानी एयर का 20-21% पार्ट जो है वो
ऑक्सीजन पे कॉन्स्टिट्यूट करता है। जॉन डाल्टन मेड अ ग्रेट स्ट्राइड इन केमिस्ट्री विथ हिज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, यानी इन्होंने एक थ्योरी दी थी एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। वी विल डिस्कस इट इन चैप्टर नंबर 3। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि मैटर जो है वो एटम पे बेस करता है, एटम एक स्मॉल पार्टिकल है, उसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, और बहुत सी बातें एटम से रिलेटेड हैं। The idea of atoms and molecules became the established fact, and the concept of atomic weight was also given by John Dalton. Gay-Lussac, Avogadro, Dulac, and Pettit and others led to the determination of relative atomic and molecular masses of many substances. इन सब ने आइडियाज दिए रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में ऑफ मैनी सब्सटेंसेस। मीनवाइल इसी दौरान J.J. Berzelius introduced the idea of symbol, formula, chemical equations to make the study more systematic, more organized, more logical, more practical. This was further enhanced by Mendeleev. मजीद इसको आगे लिखे गए Mendeleev, who discovered the periodic arrangement of the elements. Periodic arrangement के बारे में we will discuss in I guess chapter number 4, जो कि आपके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस के हिसाब से, कि एटॉमिक नंबर यूं बढ़ते जा रहे हैं, एटॉमिक मासेस बढ़ते जा रहे हैं, और उसके हिसाब से आपके एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज हुए हैं टेबल की सूरत में, तो उससे आप पीरियोडिक अरेंजमेंट कहते हैं। वो मेंडलीव ने उससे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। The ionic theory and the laws of electrolysis were put forward by Arrhenius. Ionic theory क्या है, laws of electrolysis क्या हैं, we will discuss it later in this book, and Faraday respectively. The work of J.J. Thomson, Henry Becquerel, Madame Curie, Neil Bohr, E. Rutherford, led to the discoveries of structure of atom, radioactivity, thereby opening the doors of the present nuclear age. इन सब ने एटम के स्ट्रक्चर पे डिस्कवरीज की, न्यूक्लियस पे डिस्कवरीज की, रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कवरीज की, और उसके बाद न्यूक्लियर एज जो हमारे सामने है इस वक्त, उसके दरवाजे खोल दिए। Okay, so our next topic is scientific approach in chemistry. Scientific approach. Over the years, science has developed through a series of discoveries which started off as observed natural phenomena which had to be explained. This was done by using scientific method in a systematic manner, in any organized or planned manner. Okay, so we approach anything by scientific methods. There are 4 scientific methods. Number 1, observation. Number 2, hypothesis. 3rd, theory. And the last one is scientific law. Observation. Different people observe a phenomena in a different way. Some of us observe something very critically to extract from it a new point. हर इंसान का किसी भी फिनोमेना को ऑब्जर्व करने का डिफरेंट स्टाइल होता है, उसके डिफरेंट वेज होते हैं, और उसको ऑब्जर्व करते हुए किसी नए पॉइंट की तरफ हम ले जाते हैं। Okay, so observation is a basic tool to go forth for elaborating a phenomena, but it may vary from person to person according to his own skill of elaboration. Observation जो है वो हर इंसान का ऑब्जर्व करने का डिफरेंट स्टाइल होता है। हर इंसान उसे ऑब्जर्व करता है अपनी स्किल्स के मुताबिक।
So observation is a first step in scientific approach in chemistry. When a phenomenon is observed by a scientist, एक scientist ने किसी phenomena को observe किया और उसने उस data जो उसके पास मौजूद था उसके मुताबिक possible experiments करके एक explanation बनाया उस phenomena से related, और उसके बाद एक hypothesis सामने लाया, एक आइडिया दिया जिसे हम hypothesis कहेंगे. So basically hypothesis is an idea with limited evidence as a starting point for further investigation. Now theory. The scientist convey his hypothesis to other workers of the same field for the discussion and for further experimentations. एक साइंटिस्ट था, उसने ऑब्जर्व किया, एक आइडिया दिया, हाइपोथेसिस कहलाया हुआ आइडिया, वो फिर वही हाइपोथेसिस अपने को-वर्कर्स को बताएगा, उन्हें कन्वे करेगा, उसके ऊपर मजीद एक्सपेरिमेंट्स होंगे. अब हमें पहले ही बताया था, क्या बताया था? Observation vary from person to person according to their own skills. So हर साइंटिस्ट अपनी स्किल के मुताबिक अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उस हाइपोथेसिस को जज करेगा, एक्सपेरिमेंट्स करेगा, और जब वो हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सही प्रूफ होगा, then it becomes a theory or scientifically accepted idea or a principle to explain a phenomena. A theory which is tested again and again and found to fit the fact and from which valid predictions may be made is then known as scientific law or principle. जो थ्योरी को बार बार टेस्ट किया जाएगा again and again and it prove true, correct again and again, then it will become a scientific law.